Speaking of choosing wisely, a note to the press corps, to the American media, as I just can't help but notice the endless stream of garbage, the relentlessly negative coverage. You cannot resist peddling, despite the historic and important success of this effort and the success of our troops. Sometimes it's hard to figure out what side some of you are actually on. It's incredibly unpatriotic. This same press corps, not this exact same press corps, but at least an older press corps, bent over backwards during the Biden administration to explain away the disastrous and disgraceful Afghanistan withdrawal. You called it the greatest airlift in American history. It's almost like you're cheering only for one side. This past Sunday, I was sitting in church with my family, and our minister preached from the book of Mark, the 3rd chapter. And in the passage, Jesus entered a synagogue and healed a man with a withered hand. The Pharisees came to watch. And as the scripture reads, they came to see whether Jesus would heal him, or he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. You see, the Pharisees, the so-called and self-appointed elites of their time, they were there to witness, to write everything down, to report. But their hearts were hardened. Even though they witnessed a literal miracle, it didn't matter. They were only there to explain away the goodness in pursuit of their agenda. As the passage ends, the Pharisees went out and immediately held counsel against him, how to destroy him. I sat there in church and I thought, our press are just like these Pharisees. Not all of you, but the legacy Trump-hating press. Your politically motivated animus for President Trump nearly completely blinds you from the brilliance of our American warriors. The Pharisees scrutinized every good act in order to find a violation, only looking for the negative. The hardened hearts of our press are calibrated only to impugn. I would ask you to open your eyes to the goodness, the historic success of our troops, the courage of this president, and this historic moment for a deal that could end the Iranian nuclear threat, the incredible battlefield victory laid before your eyes, the not one, but 2 incredible rescue missions, miracles, you might say, or a locked-in blockade. Or how about historic recruiting numbers? Yesterday, we announced that the Air Force and the Space Force met new higher goals in FY26, 5 months in advance of the end of the fiscal year, five months ahead of time. The Marine Corps and the Army will soon do the same. 2-3 years ago, we couldn't meet lower recruiting numbers, not even close. Where are the reports on that? Where's the coverage of the new spirit in the country, the new spirit in the ranks, the surge of Americans wanting to join the greatest military in the world? Nothing from the fake news. We sense a pattern. You see, on the battlefield, these are demonstrations of uniquely American capabilities, strength and resolve. It's all around you each and every day. But in the press, you only seek the negative, earning each and every day the fake news label. But the American people, with goodness in their hearts, see past the Pharisees in our press. They see the goodness. You watching, you see the goodness. They see the success. They see the reality. And they don't demand perfection, and perfection is not possible on any battlefield. But they see the incredible feats that our troops accomplish every single day. So to those troops, stay focused, block out the noise, stay aggressive. You are showing the world what it means to be an American warrior. You are making this building and the American people proud. We pray for you every day, and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp,
for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Mr. Chairman, over to you. Thank you, Mr. Secretary, and good morning, ladies and gentlemen. Thank you for being here today. Last week, the President of the United States directed a ceasefire that temporarily paused major combat operations in Iran. The unprecedented effort by America's joint force during Operation Epic Fury set the conditions for this ceasefire. And as the Secretary said, I'd like to emphasize during this pause that the United States joint force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. This morning, I'd like to give you an update on the ongoing blockade in the CENTCOM AOR area of responsibility. On Monday, 13 April at 10 a.m. Eastern Standard Time, at the direction of the President, America's joint force began implementing a blockade against Iran under the leadership of Admiral Cooper and the team at CENTCOM. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in international waters. In addition to this blockade, the joint force, through operations and activities in other areas of responsibility, like the Pacific area of responsibility under the command of Admiral Paparo, will actively pursue any Iranian-flagged vessel or any vessel attempting to provide material support to Iran. This includes dark fleet vessels carrying Iranian oil. As most of you know, dark fleet vessels are those illicit or illegal ships evading international regulations, sanctions, or insurance requirements. More than 10,000 sailors, Marines, and airmen, over a dozen ships and dozens of aircraft are executing this mission. And let me walk you through this operation a little bit. Please go to the first slide. First to the graphic. This is taken before the blockade began. North is up. You can see the blockade line here in the center of the graphic, denoted by the red dashed line. This map is a pull from our common operating picture that we use to allow commanders and key leaders to see what is happening in near real time. We just grabbed screen grabs to highlight the actions and activities. What is not shown is how incredibly congested this area is and the incredible work that our sailors are doing to ensure that they can work in and around an incredibly busy water space. What is also not depicted here is the massive force of fighters, intelligence aircraft, helicopters, and other embarked forces, to include aerial refueling tankers that are up overhead this blockade area. You'll note that the U.S. forces are in blue, Iranian ships are in red, and as we started this blockade, there were 7 ships of interest that were of concern for U.S. Central Command. Through a variety of intelligence tools and with the assistance of the Office of Naval Intelligence and other intelligence agencies, the force began to hunt for potential interdictors at 10 a.m. Eastern Standard Time. Next slide, please. It's now 12:40 Eastern Daylight Time, 2 hours and 40 minutes into the blockade, as attempted blockade runners attempt to hop the line. U.S. forces began to commit. Out in front of them was a range of intelligence, surveillance, reconnaissance, and tactical assets. And immediately these runners began to see, sense, and feel America's combat power compressing upon them. The lead ship, normally a destroyer as depicted here, along with air power off of the USS Abraham Lincoln Strike Group, began to move towards those ships. At each point,
the United States Navy will transmit a warning. A young sailor, normally on the bridge of one of those destroyers, a junior officer, picks up that mic and transmits, and I quote, "Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. Turn around or prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force." And as this message is being transmitted, as I mentioned earlier, those shipmasters can literally see, sense, and feel the pressure around them. It's a finely tuned machine, rehearsed multiple times, and executed now 13 times since the blockade has begun. Next slide, please. We're now 24 hours plus into the blockade. You can see the turning around of multiple ships, 12 of which stayed inside the blockade line, one of which not depicted off to the eastern side, turned around before even attempting it. Any ship that would cross the blockade would result in our sailors executing pre-planned tactics designed to bring the force to that ship, if need be, board the ship and take her over. And that includes a series of escalated force options, which could include warning shots and others. Next slide. The final graphic shows taken at 11:20 p.m. the night of 14 April. You can see that the captains of all these ships have made the wise decision not to move, transit, or run this blockade. As I mentioned, so far 13 ships have made the wise choice of turning around. And as we continue to hold this blockade at the order of the Secretary and the President, any vessel that compares to comply with our instructions will be dealt with accordingly. As of this morning, U.S. Central Command has not been required to board any particular ships. And I'll remind you that we are also conducting similar maritime interdiction actions and activities in the Pacific AOR against those ships that left that area before we began the blockade. Before I turn it over to Admiral Cooper, I want to talk briefly today about the men and women enforcing the blockade, America's sailors and Marines, and today particularly our destroyer and surface forces. When we talk about an American destroyer, it's important that you and the American people understand their capabilities. An Arleigh Burke-class destroyer are the backbone of the United States Navy surface fleet. Over 500 feet long, they displace 9,000 tons, and it is the sports car of the United States Navy. From the keel to the mast, they stand nearly 10 stories tall, and their 4 gas turbine engines can drive the ship at 30+ knots. These ships are armed to the teeth with surface-to-air missiles, land attack cruise missiles, anti-ship missiles, anti-submarine rockets, torpedoes, 5-inch naval guns, multiple electronic warfare systems, embarked helicopters, extending the reach and capability of each and every one of these destroyers. But far and away, the most important weapon on board these ships is the American sailor. Over 300 warfighters are the heart and soul of these warships. At sea, sometimes for months, and these ships out in the CENTCOM AOR have been out there for months. They operate around the clock in a constant state of readiness, always delivering for our joint force. It's hot in the engine room. The engineering team keeps the lights on and the ship powered and able to respond to the orders from the bridge. On that bridge, our sailors maintain a constant watch, maneuvering the ship tactically and safely through always congested water space. And there is a lot out there. It is like driving a sports car through a supermarket parking lot on a payday weekend with thousands of kids in that parking lot as you attempt to maneuver through there to get to that ship that would attempt to run that blockade. Down in the Combat Information Center, the CIC, the Tactical Warfare Center of the ship, that is where the decisions are made. As threats appear, these young sailors are making real-time decisions on how to identify these threats and handle them, and they always deliver. These ships
are run by the youngest sailors in our surface warfare Navy. The helmsman, the sailor on the watch at the bridge, is normally just between 18 to 19 years old, and they are trusted to drive this warship through that supermarket parking lot without hitting anything. The conning officer, an equally young commissioned officer who's normally just a few years out of college, is the ones that are giving that young helmsman the orders on where to take that American warship to execute the mission that the Secretary and the President has given us. These are incredibly well-trained sailors. They are led by incredible leaders, salty, experienced leaders, and trusted with deep responsibility. And I'm so humbled and proud of America's Navy. These sailors choose to take the road less traveled to go into the historic surface Navy, and they deliver every single day. Finally, as I often do, I want to highlight one of those surface sailors today and remember our fallen. Today we remember Ensign Robert Thompson of the U.S. Laffey, who died on this day in 1945 in the Battle of Okinawa. He was killed while fighting a fire along with 31 others as 2 Japanese kamikaze aircraft hit their ship. He passed away 1 week after his 22nd birthday and was posthumously awarded the Navy Cross. We remember Ensign Thompson today and all of our World War II vets who continue to give us the gift of a great example, and those surface warfare sailors who are out there doing the job right now. Take the courage, grit, and determination that those World War II vets gave us into these actions and activities that they're tasked to do every single day. So now I'd like to turn it over to Admiral Cooper to give us a readout of his recent trip to the region. Well, good morning, and Mr. Secretary, thank you for the kind invitation, and Chairman, great to join you. It's a real honor to be here representing the more than 50,000 American service members deployed throughout the Middle East today, supporting operations. And it's great to have the opportunity to highlight the tremendous efforts our warfighters operating forward and the important partnerships with regional allies that continue to thrive. In fact, yesterday I returned from my second trip to the Middle East in the past 15 days. 2 very different visits, one during our offensive operations against Iran, and the second in this most recent trip during the ongoing ceasefire. Very different. During both of my recent trips, I visited with our troops who were deployed across the region in more than 70 different locations, in a distance that largely spans between Florida and Arizona. I've long believed that every success that we have starts and ends with our people, and boy does this shine through brightly. During these visits, I had the privilege of personally recognizing more than 100 servicemen and women for their extraordinary valor, their courage, and their initiative under fire and delivering fire. And every time I interact with these young men and women downrange, I am deeply inspired by their courage, their resilience, and their unwavering commitment. The stories are remarkable. In many cases, you've seen this play out over TV. Fighter pilots who took out Iranian missile launchers in the moments prior to their launch against Americans and our partners, and who hit key military targets in and around Tehran on the attack more than 13,000 times. I met with some of the teams that helped to bring our F-15 airmen home safely from Iran and heard first-person accounts of the stories. Absolute heroes. I spent time with our troops who are employing cutting-edge tactics and technology for the first time in warfare. I won't be able to talk about what those are, but these young men and women are breaking new ground. It's incredibly inspiring. I met with teams who launched our own one-way attack drones into Iran. These were originally Iranian-designed drones. We brought them back to America, took the guts out, put a made American stamp on them, and fired them right back to Iran. Very effective. I met with teams who are employing AI every single day to help us sift through vast amounts of information to help us make decisions faster. And importantly, humans are always in the loop in this process. I met with our Space Force teams and our cyber specialists, whose work cannot be discussed, but who serve with indispensable impact. I met with our logisticians and sustainers all over the region. There is just no military that executes logistics like the U.S. military. This group is doing exceptional work, moving thousands of tons every single day. I met with our air defenders who shot down Iranian ballistic missiles. My message for this group in particular is that their actions most certainly saved
thousands of lives across the Middle East during Epic Fury. And all told, my personal assessment is, after these couple of trips, is our troops are highly motivated, they're focused, they're vigilant, and they're ready. And they're using this time to do a couple of things. We're rearming, we're retooling, and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. A little note about partners. My discussion with regional allies and partners, both at the senior civilian level and the senior military level, reinforced our shared commitment to regional security. But beyond that, having now fought together side by side, I assess that our military partnerships are stronger than ever as we continue to maintain a very active defense posture across the region during this ceasefire. And that posture stretches across the entire Arabian Peninsula, and it runs from northern Iraq all the way down into the northern Arabian Gulf. In creating the largest air defense umbrella in the world across the Middle East, we embedded specially trained U.S. military air defenders alongside our partner nation soldiers, side by side, literally side by side. And to give you a sense of their contribution and impact, the King and Crown Prince of Bahrain both personally knew our soldiers by name. These leaders expressed appreciation for our service member who continue to stand shoulder to shoulder with our partners in support of regional defense. And this is a sentiment that is widely shared across every Gulf ally. I heard this message over and over again, which is, we stand with you. As the Secretary and the Chairman have said, Bahrain, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Jordan have been exceptional teammates. I had a chance to meet with both their senior leadership as well as their troops. Boy, equally inspiring and equally committed to mutual defense. They defended Americans and they defended their own country. It was inspiring. And there's been no better teammate than Israel. Together, the four best air forces in the world, the Israeli Air Force, the U.S. Air Force, and the air forces of the U.S. Navy and U.S. Marine Corps, together met and exceeded our own military objectives over and over again. Twice in the past 2 weeks, I've met with the Israeli Chief of Defense to ensure that we remain closely aligned, and we do. And then finally, let me just close by saluting the brave men and women who are in uniform and who continue to answer the call with unrivaled lethality, great teamwork, and resolve. We've asked them to stay ready during this period, and that's exactly what they're doing. I couldn't be prouder, and I know that you and the American people share in that same pride. Thank you so much. All right, we'll take a few questions. Go ahead. Thank you. Alexandra Ingersoll, One American News. How is the Iranians' decimated command and control affecting the ceasefire at this juncture? Ergo, how are we enforcing a ceasefire with an enemy who has virtually no command and control? And then one other question about the Houthis being, have the Houthis been an issue in the Straits of Hormuz and the Bab al-Mandab Strait at the Red Sea, or are we tracking that militarily? Appreciate that. On the ceasefire front, it's right. Their command and control capabilities are highly degraded, so their ability to talk, see, sense is at the worst it's ever been. But their motivation to want to stay in the ceasefire is very high because they understand that a violation of that ceasefire means a commencement, once again, of Admiral Cooper's forces, which went very poorly for them. So they have a high incentive to maintain that ceasefire, even though they can't talk and organize as well as they'd like to. And as far as the Houthis, thus far, they have stayed out of it, which, of course, we think is a good decision by them, and I think is a reflection of the fact that over a year ago in Operation Rough Rider, we had an ongoing and intense campaign that demonstrated American capabilities, which has them hesitating to want to do something on that strait, which I think would be a poor choice. Right here. Good morning, Mr. Secretary, gentlemen. David Zia, Real America's Voice. As commercial shipping ramps up, you know, there was 130 ships a day going through there. As that happens, ships have to anchor up, right, and wait to pass through the narrow strait. Is there any progress with an international force to phase out U.S. military-led escorts or other? Is anyone stepping up to do that? It's a great question. They should be. There's a lot of talk, and what we've seen in this conflict from allies, and there's a lot of talk, except for the ones that were mentioned by Admiral Cooper in the region who've been phenomenal. Other allies have talked a lot and haven't done anything. And as the President has pointed out, this is a waterway that
the American commerce doesn't use all that much. We don't rely on the energy coming out of the Strait of Hormuz, but Asia does, and Europe does, and large parts of the rest of the world do. And so their ability to muster a collective defense or a clearing of the straits would be a wonderful thing. And we hear and see the talk about it, but when shots were fired and those countries were needed the most, they weren't there. They weren't in the strait, they weren't alongside us, their leaders weren't rallying what they have of their navies. If they decide after CENTCOM does the heavy lifting, which again, they should be able to do. We should live in a world where other countries can defend waterways, not just the United States Navy. Should that conclude, which we believe it will, then we would welcome other countries coming in after the fact. But you can't live in a world in perpetuity, and this is a message to the rest of the world and our allies, where you just rely on America to continually do the heavy lifting. Oh, Iran might get a nuclear bomb. Who's going to do something about it? America. And America only. Other allies need to invest in their capabilities so they can project power and do basic tasks like clearing a strait. So we're not counting on it, but it would be wonderful to see it if it ever materialized. Yes. Thank you, Mr. Secretary. Thank you all for your time. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear. Believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target, we see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. They say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways, which we are quite used to. Ultimately, they need to come to the table and make a deal. And I'll hand it over to Admiral Cooper, please. Yeah, I would just reiterate my previous comment. Morale is very high. And anyone in the military can take about 2 seconds to figure out what morale looks like by meeting around with the people. And it is crystal clear. These are motivated young men and women. I had the wonderful privilege of writing a letter early on in the operation to the team forward. And I told them this was going to be a mission of extreme consequence. And serving at a time where you are making a difference, consequential, as the Secretary and the Chairman have described over and over again, is incredibly and deeply meaningful. And I think that's the key part of the drive, as well as being great teammates across the board. It's a privilege to watch. Jerry. Thank you. Jerry Dunleavy with Just the News. I have a couple of questions. First is some critics of the Trump administration policy, including former NCTC Director Joe Kent, have attempted to claim that the Trump administration's policy of zero enrichment for the Iranians is not actually President Trump's policy, but was foisted upon him by the Israelis. Looking back, doing a bit of a refresher for myself, I saw that zero enrichment was the Trump State Department's policy in the first admin. Just stop for a second. As someone who, unlike the individual you referenced, is in the presence of the president nearly every day and has been inside every single key meeting that has happened surrounding the idea of Operation Epic Fury, not a single thing has been foisted upon the President of the United States. President Trump makes his own decisions about the interests of this country and defending our interests, and then working with allies and partners, in this case, Israel, who's got a lot of will and a lot of capabilities, which we're grateful for. Nothing gets foisted on President Trump. So those people who are not in those meetings who like to say things about that are just flat wrong. For Admiral Cooper, if that's Sure. okay. Thank you, sir, and thank you for being here. So during Operation Epic Fury, 13 U.S. service members have lost their lives, some of them in an apparent aircraft refueling accident, and some of them from Iranian strikes, including a drone strike. I was wondering if you could share a little bit with us about
how those Iranian strikes were able to be successful, and what lessons you've learned, and how you're applying those lessons in the future to make sure that we're able to defend a little bit better against that sort of thing. Sure, really broad question, but first, we will always honor the fallen, and the 13 who lost their lives really helped steel the resolve and congeal the motivation of the forces that are deterred. I met many people who knew the fallen personally. I met many who were reported as wounded and are back. 90% of those who have been wounded have been back to duty. It gives you a sense of purpose and motivation. We have collected dozens, if not hundreds, of lessons learned. And as we sit here right now, the Joint Force across the board is taking them and very tactically applying them right now, right here, right now. If I think about a football analogy, if it's halftime or between the third and fourth quarter, great teams are always adjusting, and we are certainly a great team, and that's what we're doing right now, taking the lessons and applying them in a meaningful way. What those are, I'm not going to talk about. I'll say they extend also outside Hamm and across the rest of the Joint Force. We are a learning organization, so adversaries around the world should recognize that and be aware of that. No doubt. And likewise, I mean, the chairman and I have had the opportunity to greet those 13 and their families at Dover, and it does steel our resolve. And I can just attest to the planning that went into every aspect of this, and force protection, ensuring that CENTCOM has whatever it needs and that they're taking the proper posture has always been number one in this effort. Last question. Thank you, Secretary Hegseth. There's reporting that says U.S. intelligence indicates China is preparing weapons shipments to Iran during this ceasefire. What's your reaction? Are these reports accurate, and what would be the consequences for the Chinese if they move forward with these shipments? Well, as you know, President Trump has a very strong and direct relationship with President Xi, and they've communicated on that, and China has assured us that that indeed is not going to happen, and in the spirit of the meeting they'll have next month. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. से जनरल डैन कैन और एडमिरल कूपर की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ खींच निकाले गहरे जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग। और ग्लास शाइन, आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। गेस करो किसका बर्थडे है? मेरी स्किन का। ये है नई सी ब्राइट हर रोज विद ग्लो एंड लवली रिन्यू ब्राइट। इसका नया सिनेमाइड बूस्टर अंदर से उभारी 2000 नए स्किन सेल्स। नई सी ब्राइट स्किन, तो रोज कहो हैप्पी बर्थडे डियर स्किन। अब आपकी ग्लो एंड लवली हो गई है नई विद ग्लो एंड लवली रिन्यू ब्राइट। और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ खींच निकाले गहरे जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, इसमें है बायो प्रोटीन। ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों?
यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार, कम घुले ज्यादा चले। टेलीनॉर मंथली कॉल प्रीमियम से मिले 3000 और नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 500 रुपए में पूरे महीने के लिए। तो अभी टेलीनॉर पर आओ, ऑफर लगाओ और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने की टेंशन को भूल जाओ। मिली क्या? नहीं। मैम से ही पूछ ले। क्या पूछना है? वो आपका फेस सीरम। सीरम नहीं, मेरे ग्लो का राज है लक्स ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ, जो दाग धब्बे कम करे और दे सीरम जैसा ग्लो। लक्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। डील तो पक्की थी, रुक क्यों गई? पूरी बॉडी में सनसनाहट, हाथों में कपाहट, पैरों में डगमग, दिल में धक धक, सर में चक चक, ये फीलिंग ही अलग और सांस है झटपट। ये कब होता है? जब क्लाइंट ज्यादा हो और दूसरे नेटवर्क्स पर, तो उन्हें लंबी लंबी कॉल्स करने से कहीं मेरा सारा बैलेंस ही ना उड़ जाए। बेहतरीन वॉइस क्वालिटी के साथ किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर बेफिक्री से कॉल करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ये लो पूरे महीने की मोस्ट अफोर्डेबल स्ट्रैटेजी हर किस्म की डील के लिए। जिससे चाहो कॉल मिलाओ। टेलीनॉर मंथली कॉल प्रीमियम से मिले 3000 और नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 500 रुपए में पूरे महीने के लिए। तो अभी टेलीनॉर पर आओ, ऑफर लगाओ और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने की टेंशन को भूल जाओ। आज का मैच देखने वाला होगा। वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट। सॉल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। कुछ अच्छा? हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा नहीं भर पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन का रिफिल। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक। अब बाल देखें 2 गुना घने, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल वरीज। नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू, पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन। गेस करो किसका बर्थडे है? मेरी स्किन का। ये है नई सी ब्राइट हर रोज विद ग्लो एंड लवली रिन्यू ब्राइट। इसका नाइसिनामाइड बूस्टर अंदर से उभारे 2000 नए स्किन सेल्स। नई सी ब्राइट स्किन, तो रोज कहो हैप्पी बर्थडे डियर स्किन। अब आपकी ग्लो एंड लवली हो गई है नई विद ग्लो एंड लवली रिन्यू ब्राइट। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है।
मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। आज पाकिस्तान में हर 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन की कमी है, इसलिए जरूरी है नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। टेलीनॉर मंथली कॉल प्रीमियम से मिले 3000 और नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 500 रुपए में पूरे महीने के लिए। तो अभी टेलीनॉर पर आओ, ऑफर लगाओ और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने की टेंशन को भूल जाओ। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ खींच निकाले गहरे जिद्दी दाग। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। रोने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? क्या है मावरा का क्राइम सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। इट्स हेयर फॉल। जब भी रोना होता है अपने हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ, आंसू टपक जाते हैं। मेरे बाल। मावरा स्टॉप क्राइंग। यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ, जो हेयर फॉल कम करे 10 गुना। ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फॉर मी। कट। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे ज्यादा रहा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। आज का मैच देखने वाला होगा। वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट। सोल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं। इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। आज का मैच देखने वाला होगा। वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट। सोल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट।
रोने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? क्या है मावरा का क्राइंग सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। इट्स हेयर फॉल। जब भी रोना होता है अपने हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ, आंसू टपक जाते हैं। मेरे बाल। मावरा स्टॉप क्राइंग। यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ, जो हेयर फॉल कम करे 10 गुना। ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फॉर मी। कट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। आपके हाथ कभी इधर कभी उधर, फिर वो पहुंचते हैं इधर और इधर। ज्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन, जो रखे आपको और आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से महफूज। पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोजाना। डेटॉल, बी 100% श्योर। टेलीनॉर मंथली कॉल प्रीमियम से मिले 3000 ऑल नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 500 रुपए में पूरे महीने के लिए। तो अभी टेलीनॉर पर आओ, ऑफर लगाओ और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने की टेंशन को भूल जाओ। डील तो पक्की थी, रुक क्यों गई? पूरी बॉडी में सनसनाहट, हाथों में कपाहट, पैरों में डगमग, दिल में धक धक, सर में चक चक, ये फीलिंग ही अलग और सांस है झटपट। ये कब होता है? जब क्लाइंट ज्यादा हो और दूसरे नेटवर्क्स पर, तो उन्हें लंबी लंबी कॉल्स करने से कहीं मेरा सारा बैलेंस ही ना उड़ जाए। बेहतरीन वॉइस क्वालिटी के साथ किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर बेफिक्री से कॉल करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ये लो पूरे महीने की मोस्ट अफोर्डेबल स्ट्रैटेजी हर किस्म की डील के लिए। जिसे चाहो कॉल मिलाओ। टेलीनॉर मंथली कॉल प्रीमियम से मिले 3000 ऑल नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 500 रुपए में पूरे महीने के लिए। तो अभी टेलीनॉर पर आओ, ऑफर लगाओ और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने की टेंशन को भूल जाओ। आज का मैच देखने वाला होगा। वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट। सोल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट। रोने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? क्या है मावरा का क्राइंग सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। इट्स हेयर फॉल। जब भी रोना होता है अपने हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ, आंसू टपक जाते हैं। मेरे बाल। मावरा स्टॉप क्राइंग। यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ, जो हेयर फॉल कम करे 10 गुना। ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फॉर मी। कट। अली भाई, मैंने अनस के साथ नहीं सोना, मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए। पुत्र, मुझे चादर दे जा जरा। अली बेटा, जरा नरम वाला तकिया ला दो। अली भाई, कंबल नहीं लाया आप मेरा। एक साइज में सब फिट आए या ना आए, एक ऑफर में सब फिट जरूर आएंगे। अब जैज वी5 फैंटास्टिक शेयरिंग पैकेज लगाएं और 5 लोग पैकेज शेयर करें। ऑफर के लिए अभी स्टार 400 हैश मिलाएं या समोसा ऐप से सब्सक्राइब करें। ये ऑफर है हिट, क्योंकि एक ऑफर में पूरा ग्रुप फिट। आई टर्बो मोड में 75% बिजली की बचत और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स। ओह नो, मेरे बाल। Who needs a comb? मैं करती हूँ फिंगर comb। मेरे बाल जो रहते हैं इतने मैनेजेबल। Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से। इसमें है 100% नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, जो बालों को बनाए स्मूथ एंड फिंगर comb रेडी। Palmolive Naturals, ब्यूटीफुल हेयर रेडी विद अ फिंगर comb।
डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है बालों को बनाए स्मूथ एंड फिंगर कॉम रेडी। पाम ऑलिव नेचुरल ब्यूटीफुल हेयर रेडी विद अ फिंगर कॉम। 5 साल की वारंटी के साथ रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है Bonds, miracles happen. अमरीकी वजीर जंग ने मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान पर हमले का इशारा दे दिया। तेहरान के लिए पैगाम है कि उस पर नजर रखे हुए हैं। ईरान और अमरीका की सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। ईरान किसी सूरत भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पीट हेग्जेथ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमरीकी जनरल डैन कैन ने हुकूमत के एक इशारे पर अमरीकी फौज को दोबारा हमले के लिए तैयार करार दे दिया। ईरान के डिप्टी आर्मी चीफ ने दुश्मन के मुज़ाकरात पर मजबूर होने को ईरान की अजीम फतह करार दे दिया। ये ताकत का उसूल है कि वही फरीकैन मुज़ाकरात करते हैं जो बराबर होते हैं। जून की 12 रोज़ा जंग ने बहुत सबक सिखाया। 7 माह के अरसे में ड्रोन्स पैदावार में 10 गुना इजाफा किया। ब्रिगेडियर जनरल रजा का इंटरव्यू। मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी क़यादत से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की जानिब से कतर और खलीजी ममालिक में हमलों की मजम्मत। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जंग से पैदा सूरत हाल के खित्ते पर असरात का जायजा। अहम उमूर पर मुशावरत और हम आहंगी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी फ़ज़ाई हुदूद में गैर मामूली इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। Honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा ईरान के दौरान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ से मुलाकात। मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा मौजूद। ईरानी क़यादत का With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. कई मुल्क सालसी के ख्वाहिशमंद, लेकिन पाकिस्तान बेहतरीन सालिस। व्हाइट हाउस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद को मौजू तरीन मकाम करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला जल्द इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी मीडिया का जंग के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान का फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया कि जंगबंदी में तौसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। सालिस ममालिक आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जौहरी अफजूदगी मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का कहना है एटमी मसले के कुछ निकात पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का जहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और सालसी के किरदार पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खित्ते में ईरान की बालादस्ती की ख्वाहिश का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। broader pursuit of stability between the United States and Iran. Throughout sustained interaction with both Washington and Tehran, Islamabad has sought to encourage dialogue, facilitate the exchange of messages, and helping create conditions and space for conducive and meaningful negotiations.
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भरपूर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशां रही। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी, अमरीकी फौज का दावा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ को पुलिस बनना चाहते हैं, क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रजाई का सवाल। ईरान की वजारत तालीम का मुल्क भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से ऑनलाइन करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक एजुकेशनल लेवल्स और ग्रेड्स पर फैसला लागू होगा। तमाम स्कूलों में बाकायदा क्लासें आर्जी तौर पर बंद करके ऑनलाइन तदरीस शुरू की जाएगी। We are very grateful to Pakistan, and we do appreciate the role of Pakistan in creating the atmosphere and creating the environment for those negotiations, and we hope that they will be resultful. रूस की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि पाकिस्तान की अमन की काविशों पर शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशें बावरावर साबित होंगी। उन्होंने अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز پاکستان. سلام مردم عزیز پاکستان، پیام پرمهر شما به دست ما رسید. پاکستان از شما متشکریم. मुश्किल वक्त में साथ देने पर ईरानी अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार। तेहरान में रैली के दौरान मोहब्बत का इजहार। ईरानी टीवी ने भी पाकिस्तान के लिए खुसूसी नगमा रिलीज कर दिया। पेंटागन का असलहा तैयारी के लिए अमरीकी कारसाज कंपनियों से राब्ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी फौजी हुक्काम की जनरल और फोर्ड मोटर हुक्काम से मुलाकात हुई। कारसाज कंपनियों से हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की तैयारी का मुतालबा किया गया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेंटागन ने GE एरोस्पेस और ओशकोश के ओहदेदारों से भी बातचीत की। अमेरिका ने 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को पाबंदियों की धमकी भी दे दी। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है कि उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि ईरान में जंग के नतीजे में करोड़ों इंसान भूख का शिकार हो सकते हैं। आलमी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अंडरमेट गुल का कहना था कि पहले ही दुनिया में 20 करोड़ अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हालिया जंग उनकी तादाद में 20% तक इजाफा कर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल और लबनान के दरमियान तारीखी मुलाकात कल होगी। ट्रंप के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 34 साल से बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही थी। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना है।
जनूबी लबनान के शहर बिन्त जुबैल में हिजबुल्ला और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फौज की जानिब से जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने कई घर मिस्मार कर दिए। इसराइली तैयारों ने तबनीन के इलाके पर फजाई हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा जंगबंदी के बाद अमरीका और हमास के पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात का इनेकाद। अमरीकी मुशीर की हमास रहनुमा खलील अल-हैया से काहिरा में मंगल की शब मुलाकात हुई। खलील अल-हैया पिछले साल दोहा में इसराइली बमबारी से बाल बाल बचे थे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग से मुतालिक एक और सख्त बयान। हज़रत ईसा ने सुलह कराने वालों को खुशखबरी सुनाई। मजहब को फौजी, माशी या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों पर अफसोस है। मुकद्दस चीज़ों को अंधेरे में घसीटने वाले काबिल अफसोस हैं। दुनिया चंद जालिमों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म की आमद पर गवर्नर मदीना ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल। जल्द मजीद $1 अरब की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पाकिस्तान कल UAE को $2 अरब का कर्ज वापस करेगा। सऊदी ताउन के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहेंगे। माशी महाज से अच्छी खबरों का दिन। मुल्की करंट अकाउंट प्लस में आ गया है। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक मुल्की करंट अकाउंट एक माह में 363% बढ़ा। करंट अकाउंट मार्च में $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आदाद शुमार भी हौसला अफजा। माली साल के इब्तिदाई 8 माह के दौरान पैदावार में 5.89% का इजाफा। गाड़ियों की पैदावार में तकरीबन 61.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF की पाकिस्तान की इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मजबूत माशी पॉलिसियों के साथ इस्लाहात का तसलसल माशी तरक्की को बरकरार रखने और अवामी फलाह बहबूद बेहतर बनाने के लिए अहम होगा। तुर्की में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो स्पेशल फोर्स मशकें, तरबियती सरगर्मियां अंकारा और स्पार्टा में मुनक्किद हुई। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशेवराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाक नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल तवील फासले पर तेज रफ्तारी से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने का हामिल। जदीद गाइडेंस सिस्टम और बेहतरीन मनूवरेबिलिटी मिसाइल की खुसूसियात। मिसाइल हर किस्म के खतरात से बचने की सलाहियत का हामिल है। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर करार। सिविल और अस्करी क़यादत की साइंसदानों को शाबाश, कौम को मुबारकबाद। वाशिंगटन टाइम्स ने ऑपरेशन गजब लिल हक पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियत का अक्कास करार दे दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितनौल खवारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। फौजी कार्रवाई, सिफारतकारी, सियासी लाहे अमल और इक्तिसादी इकदामात एक जामे हिकमत अमली के तहत बुरूए कार लाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिजीम चेंज का ख्वाहिशमंद नहीं। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान आवाम ने करना है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। एक नौजवान को गिरफ्तार किया जो रा के लिए काम करता था और उसका तरीकाकार ये था कि उसका जो हैंडलर शाहद नाम की एक आईडी के साथ उसको जो उसने फेसबुक पे लाहौर का एड्रेस शो करके बनाई हुई थी, उसके ज़रिए उसने उसको पहले ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस शुरू किया, उसको पहले ट्रैप किया और उसके बाद उसको छोटे छोटे टास्क देना शुरू किया। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस ने रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। आईजी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक रॉ एजेंट इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हसास मालूमात को दुश्मन तक पहुंचा रहा था। वफाकी वज़ीर तवानाई की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत। पीक आवर्स में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। डैमों से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1674 मेगावाट रह गई। पन बिजली में 1553 मेगावाट की कमी का सामना है। कुल 4000 मेगावाट की किल्लत है। उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी अमन के लिए तारीखी कोशिशों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान इंसानियत की बका और दुनिया के अमन की तारीखी जंग लड़ रहा है। इजलास की करारदाद का मतन। वज़ीर आला पंजाब ने 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी दे दी। रवा माह 100 इलेक्ट्रिक बसें, मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। हर डिवीजन में खुसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान तारीख साज मफाहमत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। सफ़र 2 घंटे में तय होगा। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन ट्रेनें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, फौती कोटा बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सितंबर 2024 तक के केसेस पर मेरिट के तहत फैसला करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वसाइल के इज्तिमाई इस्तेमाल के जरिए किसानों को बाख्तियार बनाने के इक़दामात, दरामदी अशिया के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलने, प्रोसेस करने के लिए सिंध बैंक को बाख्तियार बनाना और रोडी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए 497.57 मिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी। स्कूलों में तलबा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नई डिजिटल तालीमी पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग। हर तालिब इल्म को मुनफरद शनाख्ती नंबर जारी किया जाएगा। असातिज़ा की हाजिरी भी मॉनिटर की जाएगी। रोने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? क्या है मावरा का क्राइम सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। इट्स हेयर फॉल। जब भी रोना होता है मैं हेयर फॉल के बारे में सोचती हूँ। आंसू टपक जाते हैं। मेरे बाल। मावरा स्टॉप क्राइंग। यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ, जो हेयर फॉल कम करे 10 गुना। ना बाल गिरेंगे ना आंसू। सनसिल्क वर्क्स फॉर मी। कट। पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट की नई ब्राइट ब्यूटी जेल पावर्ड बाय ग्लूटा बूस्ट, जिसका 2 टाइम्स लाइटवेट फॉर्मूला दे इंस्टेंट एब्सॉर्प्शन और विजिबली ब्राइट स्किन। पॉन्ड्स, मिरेकल्स हैपन। अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। Allowing our leadership to take this move forward and take it through the finishing line. But as you know better than anyone else, that it's not done till it's done.
But the reality is, it's not only about Pakistan, it's not only about the region, the entire world at this point in time. And because the energy infrastructure has been hit, even if the secession, and when the secession happens, it might take weeks, if not months or even years, to get back to normalcy. Yeah. Obviously, you and many others are here this week in Washington for the IMF spring meetings. I am also here for that, and I'll be moderating the plenary session today for the IMF spring meetings. The IMF just lowered Pakistan's growth forecast for the fiscal year 2027. They're lowering that growth number to 3.5%. That's a good number, still 3.5%. But how do you see that 3.5% playing out? Where is the growth in Pakistan right now? I know you're also weighing purchases of liquefied natural gas on the spot market while boosting domestic supply of oil. What can you tell us in terms of purchases there and where the growth is right now in Pakistan? Yeah, I think from our perspective, at this point in time, the supply chain is intact. Some of our local gas fields are now firing on all cylinders. Fortunately, in addition to petroleum, on fertilizer side, we are in a good place, because that's another big issue for a number of countries in terms of food security. March numbers have come out to be pretty good. We have a current account surplus, remittances are up. So as of now, this fiscal year, and fiscal year for us, Maria, is from July 1 to June 30th, we are still expecting growth of around 4% for this fiscal year. Now, what happens next fiscal year, that is, as I said, is a function of inflation, growth, elasticities around remittances, exports, overall current account balance of payment situation. But right now, as of June end, we are very clear we are going to meet our fiscal targets and also our external reserves, which are now going to be close to 3 months of import cover. So far, so good. No. It's all a function of the duration and intensity. Of course, but very good. However, you've also needed or have received money. You've secured the $3 billion in financial support from Saudi Arabia as a way to shore up the foreign exchange reserves. Tell me about that, because there's also, that's offsetting a loan repayment to the United Arab Emirates. And we want to hear more about this, because